having adequate fund. So how to generate a adequate fund? Now that needs to be discussed, because though there are some NGOs are there, Government of India is trying to support us, but I think the World Health Organization, World Trade Organization, World Bank, UNG, UNO, that is United Nations Organization, needs to be approached, and they should generate some funds and grants to develop research activities. Then only I think we'll be able to do some research work, and those research work needs a good amount of thrust. So I'll come after this. Then the second identify some of the good institutes, research institutes, and within those research institutes, we should have the capacity to undertake high quality of research. So if we can develop some prominent research institutes, and we allow those research institutes to develop better for research applications, research oriented equipments, then only we will be able to meet the requirement. Similarly, another factor is the manpower for research. Apart from fund and infrastructure, the trained manpower is also highly essential, because the trained manpower means, I mean to say, adequate, qualified, trained, well organized, specialized manpower is needed for right kind of research. So we need to give thrust and identify the thrust area, and accordingly we should develop. Now to develop the manpower, what are the things is required? Now we need to do, like, we have to orient our course curriculum system in such a manner that the research methodology and has to be incorporated in UG and PG level. Course related subjects has to be research oriented, and the university also take up those things in the right spirit. And what will happen then, the temperament and the psychology of the students will be research oriented. Now what is happening, as though the NEP 2020 is trying to emphasize on research, and they have developed, they have announced that they are going to set up National Educational Technology Forum, that is called NETF, to provide a platform for free exchange of ideas, and which will in the long run will allow the more equipped institute, those who are having more equipped, and the smaller institutes, they can approach the bigger institutes to avail the facilities which is available in a bigger institutes. So this is a trend which is definitely going in the positive direction, and that will give rise to research also. But unfortunately, I'll try to give you a figure that as per the NRF project report, cultivated research in HEI, a country is considered critical for the success in developing your research scholars. That is, our country total figure is around 1%. That is around approximately 40,000 higher education institutes are engaged in research. Rest are not at all involving themselves for growth of their knowledge, creation of a kind of a research attitude. So there is a huge loss to India with regard to research potentiality. Similarly, another point is that regarding patent.
patent means the patent is being created by research scholars in order to go for research. But if you go for the last World uh, Intellectual Property Organization report, there it is saying that सर आपका माइक माइक ऑफ हो गया, माइक ऑफ हो गया. sorry, I think I have somewhere I caught it. I'll repeat that the patent is also a very important factor in our world, in the entire world. As per the strategic report given by WIPO, that is World Intellectual Property Organization, the total patent given by China is 13,81,584. In comparison to that, United States of America has given patent around 6,06,956, whereas our country has given 40,582, which is definitely a very small figure. But interestingly, approximately more than 68% of the patent which has been made by non-residential Indians. That means the Indian knowledge, the Indian research is having its own importance. As because our scientists, our students, our intellectual property, they are not getting that infrastructure facilities to develop the patterns and to give rise to the research, which is happening by taking our brain. The other countries are utilizing and taking the credit. So no way our country is inferior as far as the knowledge base is concerned, the intellectual property is concerned, the ideas are concerned. So our Indian people going to other countries, staying there and developing the patterns, which we are telling that NRIs. And in the total world, around 68% of the patents are being made by Indians. Now we can't say them Indians because they are NRIs. So definitely it has, we have the potentiality, but we have to go ahead and we have to organize how to do so. Again, one small thing which I had also told in other contest, that now Government of India is trying to promote such research activities. So they have also given that CSR can be also utilized for education. That is called research, education, whatever manner the industries can feel like. But my humble request will be, because in this gathering there are a lot many qualified, experienced people are here, industrialists, vice chancellors, and definitely people like Manvendraji are there. So our voice should reach to the competent authorities that there has to be a nodal agency like Indian Chamber of Commerce and Industry or any other such small scale industry corporations who can monitor, who can develop a design, a regulation, that how the CHR fund can be distributed to all categories of institutes. It should not be only concentrated in few institutes. Now what is happening, those who are very closely associated with some of the industry, they are able to get some of the benefit, but other small mediocre institutes who are having potentiality but not in a position to encash the facilities which the industries are ready to give, because there is a lack of coordination. So we need to bridge the gap between the education and industry, so that all the talent which are there with us
with the institutes, with the educational people. Those support can be used by the industry for their problems, for achieving better production, for achieving better marketing. The industry can avail the manpower, qualified manpowers, and the industry should come out with their problems so that we educational institutes will try to resolve their problem by utilizing our resources, that is nothing other than the students and the faculties who are really able to do a very good job for them. So my question is how we will be able to do that. Some kind of coordination is required in order to get those facilities. At the last, I think challenges are many, but the steps taken by the government and the Ministry of Education are in the right direction. In coming days, we can see many of such higher education involving themselves in research activities, increasing research out of increasing the research output of our country, and our presence will be felt more in the international arena. So now the question is how to get recognition worldwide. So though our universities are not in a position to get ranking in the entire world, but the days are very near. We will get it, and with the support of all our government as well as the universities, vice chancellors, industrialists, if we join hand together, I think the days are very near to show the strength of all our country research oriented people. With this, I once again thank Manvandraji for giving me an opportunity to share my views, and I feel in future whenever any kind of such suggestion is required, we do have lot many other points. If you want, I can give a write up to that extent so that you can use that write up for utilizing and sending your comment on this to the competent authorities, to all the vice chancellors, industrialists, in order to how to organize, because we have developed certain pattern by which all the educational institutions who are interested in research can utilize the various kind of facilities which is available, but it has to be streamlined. With this, I thank all of you. Thank you. थैंक यू सर, आपने बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा की और खास तौर से कहा कि भारत के पास काफी ह्यूज पोटेंशियल है, निश्चित तौर पर है, और हमारे दिमाग को ही यूज करके कई राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके सजेशंस भी सरकार के पास जाएंगे और उसका भी उपयोग किया जाएगा और हमारे पब्लिकेशंस भी में प्रकाशित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे खास वेबिनार में जुड़े हुए हैं जी हाँ प्रो चांसलर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी अनुपम चौकसी सर। अनुपम चौकसी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मानवीन जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, और खास तौर से हमारा विषय है एजुकेशन एंड रिसर्च कॉन्क्लेव, और देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांत यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर राकेश रंजन सर, और लगातार सर अपने विस्तृत रूप से अपने तब देते हैं और खास पर कई कामों का हमारे मॉडरेट भी किए हैं। आज हम उन्हें जानना चाहेंगे कि एजुकेशन एंड रिसर्च इस कॉन्क्लेव में क्या कहेंगे। जी सर। राकेश सर, आपका माइक बंद है, माइक माइक। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू मानवेंद्र, thank you Manvin ji for giving me opportunity to speak again on education and research. The dignified panel, Manoj Dubey ji, then Dr. Patnaik, Anupam Choksi Saab, and Dr. Sri has joined. I think many participants has also joined in this webinar, because I was seeing certain questions that has been raised,
and that was just scrolling down. Still, I can see one of the questions that has popped up. Anyway, this is very relevant topic, and once again, I would like to congratulate Manvendra ji that he and ICCI is giving us opportunity to discuss about education and research. I would like to go back to the history a little bit. That we always talk about our glorious past, but those past which we talk is referred some thousands of years back. India has been marred by invaders in the last 1,000 years, and many of our the educational institutions, library, those were burnt. Our knowledge base were tried to marginalized, and probably we are not there in the mainstream, and this has percolated for thousands of years in Indian society. And thankfully, in 1947, when we got liberated and when we got independence, we had got many challenges in front of us. Our literacy rate was very, very low, and our fatality rate was very high. Average survival expectancy year was also very low, which has gone multifold now. Now we claim that many of the state has got almost 100% literacy. The life expectancy has gone nearly 70 years. The livelihood has improved, and this has become possible due to the consistent effort by the leaders of the modern India over last 75 years. So, all said and done, that India's ranking in present situation in World Forum is less, but we had an issue, and we had to cater the largest population after China, if we compare on the World Forum. And that is one aspect. Second aspect is we believe in democracy, and in democracy you see that any new things which is implemented, it we see with the pros and cons. The recent innovations that government of India has done for Agniveer, that also you see that it has been taken on the street. When we talk about the research, it is thrown with heavy weight. Research, we consider that we are going to do something fantastic, something spectacular. But if actually you see, the research means the innovative way of thinkings. Even we add a small thing in the society, in the product, in the process, in our day to day life, that should be termed as research. Though we look at that the research we are lagging behind, but we all agree and we feel proud that India has got largest number of unicorn in the recent year, and thanks to a startup. So how we take a startup? I think we have to start believing that a startup is the product of the research that was there in the mind of the young students coming out from the institutions. And those unicorn, if you see their age, they are somewhere in 30 and 35. And what they are doing a wonderful job. They are adding economic value to the society. They are coming out with the product which we do not see, in fact, because it is in the soft form, giving a lot of employment opportunity to the masses. And that perhaps we are not able to perceive and quantify, that we are involved deeply into the research, because the product is probably not seen on in a physical form. But just take one example. I think recently we all have been looking at that Elon Musk has spent around $44 billion to buy a things which does not exist in the physical form, that is Twitter. And that the amount of the money he's spending is more than the annual budget of 57 country. So therefore,
we have to understand that Indian society, Indian education system is producing the research oriented brain, which are doing good in India too. I think Dr. Arya was very nice in putting up the statistics that 68% of the patent done worldwide were by the person of Indian origin. That statistics is gives us the moral standing that we have got the IQ. But what is not reflected, that the young guys who are coming from the institutions, great institutions like IITs, BITS Pilani, IIC, and for that matter many of them are from the private institutions, and they are taking up the challenges in front, leaving the job, becoming the job creator, starting their own venture, getting also support. These young kids, they are able to muster financial support from what we call the angel funding, and the VCs are also, venture capitalists are also coming and spending. But if I come to a point that the education sectors are not getting the fund for the research purpose, it has got certain reason. Because in education sector, once we talk about the research, we get ourselves limited to a product which we call publications. But that is also very heartening. If you see the statistics of 20 years back, the China was still able to produce largest number of publication in international journal. Now we in 20 years, those gap has been filled by the education institutions, and our the faculty have started developing the appetite to publish and also patenting their ideas. The 40,000 the patent which Dr. Arya was mentioning is in India, but many of our Indian faculty, they are publishing in Australia and other patenting agencies, because there it is easier to get it published. At least we have started the habit of patenting. Otherwise, if I remember correctly, 5 years back the haldi and the neem was patented by some American in America. So now we have started taking steps to that. Now, again, a very interesting point Dr. Arya has mentioned, that 60% of the education is in the hand of the private sector. But if I take the percentage of investment by private sector for the research, it is minimal. Large number of the research, whatever institutions we have, are government funded. There is a reason, because the research per se, when it comes to develop a new product, require a resilience in ourselves, that we have to keep investing and we have to wait for longer years to actually realize the research. So therefore, the challenge in front of us is, if the private sector has to invest when we can have what will be our ROI, return on investment, which is a big question marks. So I'm very optimistic that since we have started publishing, we have started patenting, we have started training our students for coming up with the new ideas, and then implementing into their dream, which we call it a startup, and that is taking shape. In coming years, I am quite hopeful that the institutions will also have center of excellence, and these center of excellence will come with propositions, products, ideas which are marketable, sellable, and profitable. Because ultimately what rule says, whatever idea you give, if it is not converted into money, those idea takers will be very, very less. Therefore, we have to move forward. We are doing it, and we have to also keep informing our regulatory authority, UGC.
I think I would like to make few points. Particularly, I would like to draw the attention of the academicians and the leader in academics, we have Mr. Choksi and the Manvendra ji, who are in touch with the mover and shakers of the planning people. That look, we wanted to encourage research, and UGC says that the most of the institution has to go for the recognitions, which we call it NAC, and every universities and institutions are going for the NAC, and one of the criteria is specific to the research points. But if you see the recent development in the UGC has come out with a statement that for PhD, publication is no longer a mandatory criteria. Now tell me, at one place you are making a standard that research publication will fetch so much of marks to get A grade, and in PhD, which is one of the major resource for any of the institutions for doing research and publication, there you are coming up with an idea that publication is not required. So I think there is a gap in thinking. I think we must fill that. We are, there is no doubt, and everybody agreed. And Dr. Arya, with a very happy note, he made that our IQ and our people has got a potential knowledge, and they are translating elsewhere. Here also they are able to translate. But for the people who are sitting in the planning executions and creating ecosystem for the quality of research and the research per se, has to think that their acts, their decisions should not stop the path of the growth which we are all in. Now, the CSR funding is another important point, which Dr. Arya has also mentioned, and time and again I also do mention at a platform wherever I get an opportunity. Government of India has given the mandate that every organization, particularly the industry, has to spend, and this is your not a spend, this is your responsibility, and that is the reason it is called CSR, corporate social responsibilities. But if you look at carefully, every big industry has started their own industry, educational institutions, and most of their funding going there. So there is a doubt in the intent of the utilization of those CSR fund, which were meant to support the educational institutions which are actually wanted to do the research. I think I would go by Dr. Kalam. Dr. Kalam has always spoke about the research means you do something, come out with an idea which can directly influence the livelihood of the people. He used to go and meet with the people on the ground and see that what he can do to improve the life of the people, what he can make so that the cost of the medical bill can come down. So that is the research which probably India require, not because that we don't want to be in the Ivy League of the prosperous country, but for the sheer reason that we have got the large population to cater, and most of the populations still, they stay in the villages where the attention is highly recommended and desired. CSR, government has to look, and the intent has to be made clear that look, you may reduce the percentage of CSR which has to go to somewhere, but it has to be actually utilized with it with the letter and the spirit. Therefore, I suggest a few things that we have to motivate ourselves. We are doing good job. We are on the path of development. We are taking care of the research, and we understand that without the help of the research, the quality of educations may not be to the level which we want to be as a Vishwa Guru. We always go back to the thousands of years back, but now the glory of those thousands of years back, if it is to be realized today, the intention has to be clear, implementation has to be with full transparencies,
and the trust has to be developed. We have to trust our people who are on the ground. We have to trust our young generation who are here. They are highly informed in a sense compared to what we used to have. Now the young kids have got more information than we have, and they counter check also. For us, the counter checking facility were not there. Whatever our teacher used to say, we used to considered as a brahmavakya. But now there are a lot of counter checks. When there is a counter checks of the statement made by any intellectual, then the person who is counter checking is also exposed with the idea. Now I would like to conclude with one observation, that we talks about the experience. But wherever we go, we are said that the experience matter. Even the hierarchy also, we in the educational institutions, we try to give the leadership role to the experienced people. But I would like to go in different way, that look, experience is important, but that reflects old knowledge, because you gain that experience serving in the previous industry and institutions. So probably you have got the informations which you have experienced 5 years back, 3 years back, 2 years back. We need a people, and given the leadership, who are ready to acquire new knowledge, not the old knowledge which we call it experience. And that I am trying to experiment in my university wherever I am going, giving not the gray hair. Of course, all due respect, I am also developing gray hair, and I trust my old knowledge. But the opportunities are to be passed on, as far as the leadership is concerned in academic institutions, to the new leaders, to the young generations who are with the bubbling ideas, lot of energies, and freedom to explore once it is given. I'm sure that India is going to have a bright future. Education and research will be established in India, and at one point of time, the QS ranking, which last year, out of 1,000 institutions, India were only having 32. Now this participations will also go. This year I have not counted that how many are there in the QS ranking, but in this year, if you look at carefully, in 1,200, you will find, Dr. Arya, that many are private institutions that have also found the place in QS ranking. So thank you very much again, Manvendra ji, Dr. Arya, Manoj sir, Anupam sir, and all the participants. Thank you for giving me opportunity to share my ideas on education and research. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जिस प्रकार से आपने बताया कि हाँ, निश्चित तौर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जी हाँ, आपको रिसर्च की भी जरूरत है, तभी आप क्वालिटी पे एजुकेशन पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देर न करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं LNCT यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अनुपम चौक सर। आइए चलते हैं सीधे उनके पास एजुकेशन एंड रिसर्च कॉन्क्लेव पर उनके विचार जानने के लिए। जी अनुपम चौक से सर। Thank you, Manvin ji. And I'd like to thank the Integrated Chamber of Commerce and Industries for such a relevant topic, this third Education and Research Conclave. I'd like to thank the senior speakers, Dr. Arya Patnaik sir, Dr. Rakesh Ranjan sir, Manoj Dubey ji is also present here. जब अभी एजुकेशन की बात हो रही थी और जो कॉन्क्लेव है, it is totally basically dependent on education and research for education. Now at one side, the government wants GR ratio to increase. So to increase the GR ratio, the number of institutions are increased. I remember 2010, our Human Resource Minister, Dr. Shri Kapil Sibal ji, had a plan of increasing the GR ratio to 33%. And at that time, the increase in number of seats of engineering were done. Now at that time, the mushrooming of engineering colleges was there. Quality was substandard. It was not substandard. It was number of seats were increased disproportionately. Then after few years, when something like this come up, engineering mein ab jobs nahi hai. So what happened? Why the jobs were not there? The research was done. Then again, we were also the part of the same
environment system. So क्यों नहीं है? Again the point came up, भाई यार quality नहीं है सर. भाई you have increased the number of seats disproportionately in a few years time. You increased the number of seats from 4 lakh to 16 lakh. So this thing come up. So the next step came up. It should be research oriented. The faculty should be only PhD should be appointed, and only faculties with MTech or research background should be allowed to teach in the institutions. So the point when Dr. Rakesh Ranjan sir said that the thinking is not fixed. We want quality, we want quantity. One day we want a number of research. Like in medical education, we are into medical education also. One fine day, there was a mandate that now onwards, professors who have to complete at least 10 years of teaching, they can become professors in 7 years with 4 papers. So as Dr. Patnaik said, that number of research. Now every faculty member started publishing papers. So there were a number of papers in 1 year. Around, I think around 400 medical college will be there. Around 100 faculty members in each college. So in 1 year there will be 4 lakh 40,000 papers. But next year they are all promoted to professors, associate professor. Now what? In the second year there will be no research. But the research will be there, but the publications will not be there. So this thing now again one topic came up that government has a thinking now that there should be research universities and there should be teaching universities. So now what will happen? I had a discussion with somebody in the UGC. So what will be the teaching university? बोले teaching university में PhD की जरूरत नहीं रहेगी. अच्छा मैंने बोला मतलब the professor in teaching university will not be a PhD. हाँ he cannot be. अच्छा and research they will only be doing research. So again if there are 2 LNCT universities, one is research oriented and one is not research oriented, so I will be a professor in one, I will not be a professor in the second one. So what is the rules are going to be formed, they will come up. Achha, will in a private institution everybody says that the funding for research is very less. In the NIRF ranking, when the research publications were included, every private institute started giving incentive for patents, incentive for research publications. So one of the things to gather from these things is that strict no should be there. Research for public promotion should be avoided. I am not saying that it should be stopped or something, but it should be avoided. Giving something कि भाई आप research करेंगे तो आप professor बन जाएंगे, then what will happen after he becomes I become a professor? I will stop my research. मतलब I will not do anything. I will अभी हो गया मैं professor हो गया, now I'm getting a professor's pay grade. Second, only PhD as faculty. There was a in AICT also they have put up a scheme in which the industrial experience, my life experience was to be utilized as appointing me as a professor emeritus. But afterwards, when the faculties started this will reduce the number of actual professors in there, so they stopped that scheme, and then now again number of faculty should be 100% faculty members only, and nobody from the industry is to be taken. So again that came up. I have done a great job in my industry from last 20-30 years, and now I want to come and teaching and share my experience with the students. I should be given a proper response. I should be given proper responsibility. So one part of education is this. I have done a research, but I have not done PhD. I have done my research. I have done, sir, as sir was saying that now the startups are, what is a startup? It is a research in my mind, idea in my mind, which I am doing, and then I'm putting up with a committee who is approving it, who is funding it. So it is a research. And now I wanted to present to my students, but I can't because I'm not a PhD. So something has to be done. We are discussing again and again in education and research.
education cannot go without support of research. Research cannot go without support of education. If there are no research candidates, how the PhD supervisors and who will who they will guide? And if there are no research institutions, where I will do my research? So both the parts are out. One thing, private sector should be taken equally. When I was doing my BTech, the research institutions at that time, NITs and RECs were there, and IITs. They were into BTech and teaching, and to MTech and basic some research. And the research institution, one of the best is Indian Institute of Science. So I asked one of my faculty members कि सर वहाँ पे IISc में क्या BTech होता है? So he told me that no, वहाँ पे बीटेक नहीं होता. दे ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन रिसर्च एंड some MTech subjects they are teaching. Same thing came up when I discussed about NITTRs, NITs, and TTTIs at that time. Now they have become NITTRs. So again, there was no UG teaching there, and they were doing only MTech and research in education. So some we can think over for the such institutions now, where research is government is emphasizing that research universities and teaching universities, but I don't think that will be a very good idea. My idea is that there should be research institutions who concentrate on research. Secondly, there should be institutions which do both. Thirdly, a lack of opportunities for researchers is there. Sir has pointed out brain drain. Companies CSR funding was also pointed out that companies are government has allowed CSR funding to be done to education institutions. All the companies, big companies, have started their own education institutions. So, as a private sector, we find a leeway for everything. Government gives us some idea, we find another way out of that. Private institutions, private colleges, private universities, private system should be taken at par with the government, thinking that our constraint is that we have to do whatever funding we will do, the private institutions will do, they will have to generate it from the fees only. So if somebody is ready to pay that fees, okay, we can ask like CSR funding, we ask you should keep 20% of your fees collection for research. So then again, the society should be ready that fees will increase. But in our fees committee, like in Madhya Pradesh, we have a very strong fee committee which controls many aspects of education. So whenever we go for the fees, they say, हमको गरीब बच्चे का ख्याल रखना है, हमको उसका करना है. तो मैंने सर, who will pay the fee salaries of the faculty members? In the government decides 7th pay commission, 8th commission, and in just last month we had received an NCIMS, our Ayurvedic Council. They've mandated it that you have to pay 7th pay commission to all your faculty members. So we wrote a letter to them that, sir, our fees was fixed as per 6th pay commission, and you have decided this, so we will be paying that from the next session when we will decide our fees for 7th pay commission accordingly. So no, you have to pay first. So we are a university, we can afford, but there is a standalone institution, what they will do? But they are sitting in a market, they are having a funding, XYZ funding related to their pay commission. Now they have to pay 7th pay commission. From where they will bring that money? So I will say something by to the council, bhai meri permission cancel kar do. That cannot be done. If one fine day government decide सारे institutions बंद कर दिए जाएं because education का standard, what will happen to the number of students who are studying in these institutions? So we have to think for both the sides. Research, yeah, as a educationist, I think that research is compulsory, because without research, without learning, I have seen many of the professors in my institution only who have done after completing their PhD, they are not doing anything. I've asked them, sir, आप PhD हो, आपने इतने अच्छे topic पे research किया, now you should give something back to the new researchers. नहीं सर, I have done my career, मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ.
Others are there who are not able to do PhD because of some reason or other, but they are very good into doing something. So पता नहीं क्यों I want that research should be disconnected from PhD or something. And research, there was an idea that we should have a research portal or research gate where without being PhD I can put up my research ideas. That can be done also. So I think it is high time involving private players. We sit across the table, we decide what should be done for the education, what should be done for the research, and where a line can be drawn that this is the quality of education we want, this is the quality of research we want. And at the end, I like to thank the ICCI for that this particular topic. And it always, whenever I start speaking, I point out on the private side also, and from the student point also. But at the end, I think if something has to be done, it is the right time to be doing, because in next 10 years, all the changes will come up, and we should be prepared for that. Thank you, sir. Thank you very much. जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपम चौकसी सर, प्रो चांसलर है एलन सिटी यूनिवर्सिटी के। जी हाँ सर, जिस प्रकार से आपने बताया, आज निश्चित तौर पर कई तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं डिलाइट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज दुबे जी। अब उनसे जानते हैं रिसर्च और खासतौर से एजुकेशन पर उनका काफी अच्छा अनुभव है, और हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ कहेंगे आज की रिसर्च पर। जिस प्रकार से सर ने कहा था, राकेश रंजन सर ने, कि आज स्टार्टअप उसका एक रूप है, आप क्या कहेंगे? जी मनोज जी। नमस्कार मानवन जी। इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कंपनी एंड इंडस्ट्रीज के और मानवन जी, आपको इस कॉन्क्लेव को अरेंज करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सारे पैनलिस्ट, इसमें डॉक्टर पटनायक, डॉक्टर राकेश रंजन जी, अनुपम चौकसी जी, इन्होंने अपना इतना अच्छा विचार व्यक्त किया और डाटाबेस फैक्ट्स को हम सबके सामने रखा। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ साथ और भी ऑडियंस का ज्ञान वर्धन किया। यह बहुत ही माकूल टॉपिक है कि एजुकेशन और रिसर्च का कॉन्क्लेव है। इसमें जो मेरा एंगल है वो थोड़ा हटके होता है, क्योंकि रिसर्च का आमतौर पे एक कंसेप्शन हमारे यहाँ ये होता है इंडिया में कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शोध होता है उसी को रिसर्च के रूप में देखा जाता है अमूमन। हम चाणक्य और गौतम बुद्ध की धरती के हैं, जहां आयुर्वेद वेद का पाठ माना जाता है, जिसको वेदांग कहते हैं। आयुर्वेद भी एक वेदांग है, जहां पे गणित वेद का पाठ है, वैदिक गणित की बात की जाती है। वहां पे हम जो सामाजिक क्षेत्र हैं, जो ह्यूमैनिटीज हैं, उसको एक तरह से रिसर्च से कमोबेश अलग जैसा ही देखते हैं, जबकि रिसर्च को इन टोटलिटी में देखने की जरूरत है। और इसमें जो कमी रही है, सिस्टम्स में कमी रही है। जो गवर्नमेंट सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोगों की तरफ से विचार आया, प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कम कर रहे हैं। CSR का भी इशू आया, समझने वाली बात है। इससे साथ साथ मैं यह भी कहता हूं कि सामाजिक जिम्मेवारी भी इसमें सही ढंग से नहीं निभाया जा रहा। उसका उदाहरण यह होता है कि अगर समाज में सर्वे किया जाए तो परसेंटेज में भी पेरेंट्स ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि हम अपने बच्चे को रिसर्च में भेजना चाहते हैं। स्कूल्स में बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं
उनसे अगर पूछा जाए कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो शायद ही कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं साइंटिस्ट बनना चाहता, मैं शोध करके रिसर्च करके अपने सेगमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो इस मानसिकता को समझने की जरूरत है। हम यहाँ पे फेल हो रहे हैं। अगर हम सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन कम कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर कम कर रहा है, तो सरकार में भी हम ही लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही हम लोग हैं, समाज में हम लोग। अगर हमारी मानसिकता इस तरह से होगी रिसर्च को लेकर, तो हमारी प्रायोरिटी भी वैसे ही रहेगी। तो हमें इसको, रिसर्च को महत्ता देने के लिए, इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए सबसे जरूरी है कि समाज में इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाई जाए, इसकी आवश्यकता को बताया जाए, और स्कूल्स में करिकुलम में इस चीज को लाया जाए कि हर एक सब्जेक्ट में शोध को समझा जाए, समझाया जाए कि हम इसमें आगे बढ़ सकें। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्चर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप दिया, फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में प्रमोट किया। मैं ह्यूमैनिटी का छात्र था, लेकिन यूजीसी के द्वारा फेलोशिप मिलने के बावजूद इनसिक्योरिटी के तलवार हमारे गले पे हमेशा लटकती रही कि ये फेलोशिप के बाद क्या होगा। तो मेरा सुझाव ये है कि इतने पैन इंडिया लेवल पे कंपटीशन के बाद आप फेलोशिप दे रहे हैं, और अच्छा खासा फेलोशिप देते हैं आप, एक सैलरी जैसा होता है, और उसमें जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं उनकी कंपिटेंसी पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं कुछ किया जाए कि उनके फ्यूचर को सिक्योर करते हुए उनको पूरा मौका दिया है कि नहीं, आप तो पूरा रिसर्च में ही डूबो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हों या साइंस के हों या कॉमर्स के। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत करीब से देखा हूं कि फेलोशिप लेने के बाद, रिसर्च साइंटिस्ट होने के बाद, रिसर्च एसोसिएट होने के बाद भी, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, व्यक्ति बेरोजगार होता है। तो क्या हमारी ये सिस्टम्स में कमी नहीं समझा जाए इसको? उसकी कॉम्पिटेंसी पे, उसके विद्वता पे कोई क्वेश्चन मार्क्स तो नहीं है। तो जब तक एक माहौल हम ऐसा नहीं बनाएंगे रिसर्च को लेके, स्कूल लेवल से, समाज के स्तर पे, यूनिवर्सिटीज में, यूजीसी की जो पॉलिसी है उसमें, कि जो रिसर्च है उसका बहुत ही महत्व है, इसके महत्व को देखते हुए उसको सामाजिक स्तर पे भी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। बच्चे के माइंडसेट में आए कि नहीं, हमें रिसर्च करके आगे बढ़ना है, अपने को साइंटिस्ट बनाना है, हमको रिसर्चर बनाना है, हमको शोध करना है। और जहां पे इनसिक्योरिटी की बात आती है ऊंचे स्तर पर, उस इनसिक्योरिटी को खत्म करें। देखिए आपका रिसर्च सही डायरेक्शन पे हो। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये हमारे सारे रिसर्च के यूनिवर्सिटीज थे। या भारतवर्ष के ही नहीं, अन्य देशों से भी शोध करने के लिए विद्वान आते थे यहाँ पे। पुस्तकों की रचना होती थी, रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स बनते थे, उसकी स्टडी होती थी। और आज हम उस अपनी परंपरा को एक तरह से भूल गए हैं, और हर एक चीजों को मटेरियल से देख रहे हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमेशा मोटिव नहीं होना चाहिए हर एक। शोध एक अलग विषय है, क्योंकि शोध शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म्स में आउटपुट देता है। तो इसे समाज के स्तर पे, यूनिवर्सिटी के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, प्राइवेट सेक्टर के स्तर पे और गवर्नमेंट के स्तर पे इसको समझने की जरूरत है।
इस पे फोकस करने की जरूरत है, इसके बजट को बढ़ाने की जरूरत है। और जैसा डॉक्टर अग्रया और डॉक्टर राकेश रंजन जी ने कहा है कि CSR के फंड्स को भी इससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि सही मायने में मैं भी इस चीज को समझता हूँ इंडस्ट्री में होते हुए भी कि CSR का सही यूटिलाइजेशन आज नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां CSR को रिकैश कराने के लिए तरह तरह के सुविधाएं ढूंढ रही है, ढंग ढूंढ रहा है कि कैसे इसको कैश कराया जा सके। तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए और इसको जितना सोशल एक्टिविटीज में उसका इन्वेस्ट करने का प्लान है उसको ऑडिट करने की जरूरत है। साथ में इसको लिंक भी किया जाए कि अगर रिसर्च में इसको इन्वेस्ट किया जा रहा तो उसको भी ऑथेंटिकेट किया जाए। तो इस तरह से अगर ये किया जाता है तो हम ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका आउटपुट आज नहीं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद पूरे देश को मिलना शुरू हो। पहले रिसर्च को लेके माहौल बनाने की जरूरत है हर एक स्तर, और उसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सभी स्तर पे इसका पॉजिटिवनेस आएगी जब एक तरह से माहौल ऐसा हो जाएगा कि नहीं रिसर्च को प्रायोरिटी देनी है, तो उसका आउटपुट निश्चित रूप से आएगा। सभी को धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जिस प्रकार से आपने कहा है निश्चित तौर पर टोटलिटी में इसे देखने की जरूरत है, टोटलिटी में काम करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में ये लाभ देता है रिसर्च, ये आप कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों जिस प्रकार से आर्य पटनायक ने सर ने कहा है कि नोडल एजेंसी से एक भी बनाने की जरूरत है, वहीं राकेश रंजन सर ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। CSR फंड का उपयोग कीजिए, इसमें निश्चित तौर पर आपको दिखेगा। चैलेंजेस है प्राइवेट कॉलेज के पास, ये अनुपम चौक से सर ने कहा, लेकिन फिर भी रिसर्च पर हाथ जोड़ा। लेकिन देखिए कई प्रश्न, 3-4 प्रश्न आए हुए हैं, हम उन प्रश्नों का जवाब भी आप सबों से ले लेते हैं। देखिए एक प्रश्न आया हुआ है, ये आपके स्क्रीन पर है जी। ये अमीय संदीप लिख रहे हैं पटना से। रिसर्च इज बीइंग डन इन आवर कंट्री बट इट शुड बी गिवन स्पेशल फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ। अमीय संदीप पटना से। राकेश सर, हम ये जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि स्कूल से ही रिसर्च पर ज्यादा जोर देना चाहिए। आप CSR फंड की बात कहे थे, लेकिन इनका कहना है कि स्कूल्स में ही अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स में ऐसे कुछ अपने गुण आएंगे जो आगे रिसर्च के रूप में आगे काम आ सके। जी सर, राकेश सर। अगर इसको ढंग से देखा जाए तो जैसा मैंने पहले भी बोला था, रिसर्च क्या है, एक नई नॉलेज को हासिल करने की विधा है। वी एक्वायर न्यू नॉलेज बाय डूइंग रिसर्च। आप स्कूल एजुकेशन में हर साल नया नॉलेज आप गेन करते हैं। एक्चुअल रिसर्च जो हम परसीव करते हैं कि किसी प्रोडक्ट में या कुछ कट थ्रोट और फाइन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको एक बेस की ज़रूरत होती है। वो बेस मिनिमम आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आता है। बट रिसर्च पर से आप करिए जिसको हम मानते हैं कि नई विधा, नया ज्ञान, वो तो स्कूल लेवल पे हर साल होता है। आपने देखा होगा 8वीं कक्षा वाले की पढ़ाई 9वीं में नहीं होती, 10वीं की पढ़ाई आप नई शिक्षा के बारे में जानकारी लेते हैं। इन सारी शिक्षा को समाहित करके किसी नए प्रोडक्ट का रूप देना, किसी नए आइडिया को जर्मिनेट करना तभी पॉसिबल है कि ये सारे जो बेसिक एजुकेशन है वो एजुकेशन को अच्छे से हम समझें। तो आप मान के चलें कि हर दिन आप रिसर्च करते हैं। आप जब घर से निकलते हैं और कहीं स्कूल जाते हैं तो आप फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट। दैट इज ऑल्सो ए रिसर्च। रिसर्च नेवर मीन्स इन माई माइंड कि यू हैव टू बिकम आइंस्टीन एवरी डे। आपको जो कहते हैं नई सोच विकसित करने को रिसर्च हम मानते हैं, नई तरह से चीजों को करने की रिसर्च मानते हैं। अब जब आप पराठा घर में बनाते हैं तो कभी घी भीतर डाल देते हैं, कभी ऊपर डाल देते हैं। दैट ऑल्सो यू आर डूइंग रिसर्च एंड एट द एंड ऑफ द डे यू से दैट इट इज क्रिस्पी। तो देखिए एक रिसर्च जो है ना, उसको दिमाग से में जो आइंस्टीन का चेहरा हम लेके चलते हैं कि हम रिसर्चर तभी कहलाएंगे जब हम आइंस्टीन के जैसा बन जाएंगे, उसको हटाना पड़ेगा। आपको थॉमस अल्वा एडिसन बनने के लिए कितने फेलियर्स उन्होंने देखे हैं, कितनी बार 99 और 100 बार उनका बल्ब नहीं जला, तब जाके जला।
but every day he was doing some research because he was changing his mode of operation. So therefore, research we do every day. We try to do what we have to tell to our young student: be innovative, do things differently, and that is what is the research. भूल जाइए कि आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं तुरंत एक दिन में, वो नहीं होता है। उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना है, और वो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड थिंकिंग एबिलिटी को अगर आप पहले दिन से दूर करेंगे और उसको मानेंगे कि आप रिसर्च कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एट वन फाइन डे यू विल फाइंड दैट यू आर कमिंग आउट विथ बिग बिग थिंग्स which will be helpful to the society, which will gain also in terms of financial aspects. तो रिसर्च की परिभाषा अपने दिमाग से निकालिए, बदलिए, नई चीज सीखिए और उसको मानिए कि आपने कुछ नया चीज सीखा है या नया रिसर्च किया है। चलिए जी सर, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, हम आ रहे हैं आर्य पटनायक के पास। जी हाँ, इनका ये प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर भी है। इज स्टार्टअप रिसर्च द नेक्स्ट स्टेप? फरहीन है लखनऊ से। इनका कहना है कि अगर रिसर्च करते हैं तो तुरंत हम स्टार्टअप भी कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट स्टेप उसका वही है क्या? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ये पक्का सही क्वेश्चन है कि स्टार्टअप एक रिसर्च ही है। व्हेन वी आर प्रमोटिंग फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप मीन्स कुछ नया चीज करने के लिए उसका जो सोच है, और वो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उसको एक मॉडल बनाते हैं। वो जो मॉडल के लिए जो फैसिलिटीज होता है उसको जहाँ पर मिलता है, वो फैसिलिटीज को लेके एक स्टार्टअप छोटा सा बनाते हैं। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसको बड़ी इंडस्ट्री जैसा उसको बनाना है। तो स्टार्टअप इज डेफिनेटली द इनिशिएटिव ऑफ ए रिसर्च। इन माय व्यू, startup is nothing but the preliminary stage of a research. So through research ideas, startups are being done, and through startup then large scale of उसको किया जा सकता है। लार्ज स्केल में किया जा सकता है, स्मॉल स्केल में किया जा सकता है, मीडियम स्केल में किया जाता है। सो डेफिनेटली स्टार्टअप जो है वो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। स्टार्टअप इज ए काइंड लाइक, अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया कि हर दिन हर सोच जो भी हम करते हैं, कुछ नया सोच करके जब निकलते हैं, सो स्टार्टअप इज नथिंग बट सेल्फ डेवलप्ड सिस्टम बाय विच रिसर्च तो है, उसमें सेल्फ डिपेंडेंट है। उसमें उन्होंने कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम करके उसमें नए लड़का लोगों को लिया जा सकता है, नई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। सो डेफिनेटली स्टार्टअप इज द इनिशिएशन ऑफ ए काइंड ऑफ ए रिसर्च। जी सर। चलिए अगला प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न जवाब हम ले लेते हैं अनुपम चौकसे सर से। और देखिए आपके स्क्रीन पर भी प्रश्न है, ये पटना से हैं। इंस्टीट्यूशन ज्यादा स्पेंड नहीं करता है रिसर्च पर, और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, वो भी इसी में ले लेते हैं। और इनका है, क्या रिसर्च पर और भी ज्यादा खर्च करने हैं में विशेष ग्रांट की जरूरत है क्या? ये दिल्ली से संजय जी हैं और प्रभात हैं पटना से। जी सर। अनुभव सर, आप ही से, आपने इस पर ज्यादा जोर दिया था और आपसे वो प्रश्न भी आया हुआ है। जी सर। जी, इंस्टीट्यूशंस का फंडिंग है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फंडिंग हैं, और आइडियाज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो रिसर्च कमिटीज़ या जो भी बैठती हैं उनका एक रहता है कि भाई कुछ इनोवेशन तो लेके आएँ। एंड नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम एक्चुअल रिसर्च को तो कोई भी फंडिंग करने से मना नहीं करेगा। जैसे मैंने अपने वक्त में भी कहा था कि अभी जो PhDs या रिसर्च जो है वो एक्चुअली प्रमोशंस और उससे रिलेटेड है। सो व्हाट हैपेंस कि मैंने एक टॉपिक पकड़ा, पेटेंट्स की बात करूं, मैंने हमारे यहाँ पे मैंने एक वैसे पूछा कि पेटेंट क्या होता है, एक अटॉर्नी से पूछा, तो उनका कहना था कि सर आप किसी भी डिज़ाइन में थोड़ा सा भी चेंज कर दें, हम उसको एक नया पेटेंट करवा देंगे। सो ये अच्छी बात है, हमने बोला चलो खूब सारे पेटेंट करवा लेते हैं अपन इस चक्कर में। देन व्हेन द NBA टीम केम अप एंड उन्होंने कहा कि सर अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, अब पेटेंट के नंबर्स पे आपको पॉइंट्स नहीं मिलते, अब आपको पेटेंट का कितना कमर्शियल यूज़ हो सकता है उस पर मिलते हैं। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि भाई इंस्टीट्यूशंस, हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, दे आर अवेयर अबाउट दिस सिस्टम एंड दे थिंक ओवर इट, दे मेक अ कमिटी, दे फॉर्म कमिटी। और फिर हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि रिसर्च का इंडिया में ये प्रॉब्लम तो है, जो मैंने उसमें भी कहा था कि जब CSR फंडिंग या कोई भी टाइप की फंडिंग अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट हैपन्स कि
जो भी मेरे को रिसर्च के लिए फंडिंग करना है, दैट फंड हैज़ टू बी जनरेटेड फ्रॉम माई इंटरनल रिसोर्सेज ओनली। अगर हाँ मेरे पास कोई इंडस्ट्री जुड़ी होती, लाइक मेरे पास एक ऑटोमोबाइल लैब है और उसमें मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, एंड देन इंडस्ट्रीज लाइक टाटा और महिंद्रा और जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं कंपनीज, वो अगर सपोर्ट कर दें तो आई विल सर्टनली पुट अप वेरी गुड रिसर्च फेलो टू देम कि भाई हाँ ये इसका रिसर्च है, आप सर इसको फंडिंग करिए। सो समथिंग फ्रॉम बोथ द साइड हैज टू बी डन, एंड नो डाउट आज की डेट में मैं एक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ही ऐड देख रहा था, दे हैव डन मतलब उन्हें अपना बजट दिया हुआ था, तो जो हैंडसम अमाउंट था, मतलब आई कांट से कि भाई उस अमाउंट तो एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही कम पिटेंस था, बट दे हैव पुट अप अ वेरी हैंडसम अमाउंट इन दी एड। एक्चुअली कितना खर्च किया आई डोंट नो, बट हैंडसम अमाउंट इन दी एड कि हमने इतना खर्च पिछले साल रिसर्च में किया है। तो यस, नंबर ऑफ जितने मैंने जैसे कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंपेयर्ड उसमें रिसर्चर्स कितने हैं, एंड फाइनली द अमाउंट इट शुड बी आज की डेट में कम है, बट स्टिल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ट्राइंग। गवर्नमेंट तो खैर अपनी तरफ से कई सारे स्कीम्स निकालते। एक पॉइंट है जो वो है, अभी हमको AICTE से जैसे 6-7 लेटर्स आए। जब मैंने उन लेटर्स में देखा और मैंने अपनी टीम से पूछा, अपने कॉलेज में पूछा, अपने इंस्टीट्यूशंस में पूछा, तो आधी फैकल्टी को अवेयरनेस नहीं था। The second part is that awareness of available schemes is not there. कई सारी स्कीम्स मतलब इंडस्ट्रीज के पास, गवर्नमेंट के पास इतनी सारी अवेलेबल हैं, उनका नॉलेज हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको नहीं है। इस कारण से कई बार जो उनको रिसर्च फंड मिल सकता है वो नहीं मिल पा रहा है। जी सर, चलिए अंतिम प्रश्न आया हुआ है, देखिए इंदौर से प्रीतेश का है और हम ये इस प्रश्न का जवाब मनोज जी से लेते हैं। मनोज जी, ये प्रश्न आया हुआ है कि इंडियन स्टूडेंट्स की मानसिकता ही नहीं है रिसर्च की। ये प्रीतेश जी हैं लिख रहे हैं, क्योंकि आप रिसर्च स्टूडेंट रहे हैं। जी मनोज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रतेश जी का कहना मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सही है, लेकिन ये जरूर है, जैसे हमने कहा है अपने वक्तव्य में, अपने उद्बोधन में, कि हमारे समाज में ये मानसिकता अभी और लाने की जरूरत है। उनका जो संदेह इसलिए हुआ है कि जैसे हमने कहा कि अगर हम सर्वे कराएं कि समाज में कि कौन अपने बच्चों को रिसर्चर बनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई परसेंटेज में कुछ आएगा इस तरह। उसी तरह स्कूल में अगर बच्चों से पूछा जाता है तो अगर सर्वे स्कूल्स में भी कराया जाए तो बहुत कम पॉइंट्स में आ सकता है। तो उनका जो संदेह इसी वजह से होगा जी का कि भाई समाज में तो दिखता नहीं है कहीं कि नहीं हमें रिसर्चर बनना है। तो ये मानसिकता की बात उन्होंने कही है और इस पे सही मायने में जोर देने की जरूरत है कि नहीं, हमें इसका अवेयर करने की जरूरत है कि नहीं रिसर्च का मतलब क्या होता है। हमें हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ में रिसर्च हम करते हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं। आज इतिहास को लेके ये माहौल बना है कि नहीं हमारे भारत के इतिहास को रीराइट करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है कि हम बहुत सारी चीजें को इस तरह से पढ़ते आए हैं जो सही में था ही नहीं, तो उसको रिसर्च करने की तो जरूरत है, लेकिन वो कौन करेगा इसको? तो रीराइट करना है या रिसर्च करना है तो इसके लिए वो साइकोलॉजी तो होनी ही चाहिए ना पहले कि हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो वो उनका जो प्रश्न है वो माहौल को लेकर है। माहौल सही मायने में माहौल उसके फेवर में बनाने की जरूरत है और बनेगा तो उसके लिए है कि जो पेरेंट्स हैं उनके माइंडसेट में बदलाव आने की जरूरत है। और मैंने जो स्कूल्स में कहा वो मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी से थोड़ा सा इसमें डिफर कर रहा था कि मैं स्कूल में रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में ये डाला जाए कि एक रिसर्चर का भी कैरियर उनके लिए अच्छा हो सकता है। स्कूल में रिसर्च नहीं करेंगे लेकिन एक उनके माइंडसेट में तो आ सकता है कि कैरियर अच्छा होगा तो इसको ये करना होता है। ह्यूमैनिटीज के रिसर्च में आज आम लोगों को नहीं पता है कि ह्यूमैनिटीज में रिसर्च क्या होगा। तो जब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे, हम हिस्ट्री राइट कैसे करेंगे, हम वैदिक सिस्टम्स को कैसे फिर रिवाइव करेंगे, तो वो रिसर्च का ही चीज है ना। जी मानव जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। खासतौर पर आप सबों का प्रोफेसर राकेश रंजन सर, आप VC हैं सुशांत यूनिवर्सिटी के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आर्य पटनायक सर, आप सेक्रेटरी हैं राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के खास वेबिनार में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनुपम चौकसी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आप प्रो चांसलर हैं एलएनसिटी यूनिवर्सिटी के, आप लगातार आपका प्यार मिलता रहा है इंटीग्रेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज दुबे जी, आप भी लगातार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। या बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत पैनलिस्टों का धन्यवाद धन्यवाद। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर। या दोस्तों, हमारा ये थर्ड रिसर्च और एजुकेशन कॉन्क्लेव था आईसीसीआई का। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा और आपके प्रश्न ये पता लगता है कि आप कितने इंटरेस्टेड रहते हैं जुड़ने के लिए। आपके प्रश्नों का जवाब भी हमारे एक्सपर्ट देते हैं। या दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, हम अगले शनिवार को इसी समय पुनः लेकर आएंगे आपके लिए नए विषय के साथ। और निश्चित तौर पर जो कमियां हैं कि आप रेगुलेटर को नहीं जोड़ रहे हैं, अब निश्चित तौर पर आर पटनायक सर आपकी बातों का खास ख्याल रखेंगे और आप देखेंगे कि हम निश्चित तौर पर उन्हें भी लाएंगे और आपके साथ आपकी बातों को शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।